Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Synapse Academy. Today we will discuss the essay paper of OCS 2024. Exam kali sarichi. So essay paper kemi thila and how OPS is giving surprises in essay paper year after year. We will analyze the things. Last 4 years or essay paper discussion kariba. देखिबा essay paper रे OCS रे OPSC केमिति सरप्राइज दोची लास्ट 4 वर्ष essay paper आमे देख साला परे आपण मांगर ଗୋଟେ आइडिया आसीबो कि नेक्स्ट ईयर essay paper को आपण केमिति अप्रोच करिवे ता सहित गोटे मॉडल essay जोटा पढी थिला एग्जाम रे OPSC रे सेटा आमे डिस्कशन भी करिवा एंड तापर आपण मांगर आइडिया आसीबो कि हमकु एग्जाम रे essay लिखिबार केमिति अछि तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन विथ द analysis of last 4 years essay paper last 4 वर्ष essay paper 2021 22 23 24 देखिबा so just wait for a few minutes I will share the screen then we can proceed. Okay, I think all of you can see the screen. The screen is visible. Okay, so before going into the essay paper analysis per se आई वर्ष मॉडल एसे डिस्कशन करिया पूर्व आगे देखिबा लास्ट 4 वर्ष रे ओपीएससी रे एसे पेपर आछि केमती एंड केमिति ईयर आफ्टर ईयर ओपीएससी रो एसे रो क्वेश्चन पचारिबार तरीका चेंज होछ तो हमकु सेही अनुसार प्रिपेयर होबा पड़ियो. जस्ट अ मिनिट. ओके, सो दिस इज द पेपर ऑफ 2024. ओके, ता पूर्व आमे देखिबा 2021 रो पेपर. ओके, so this is the paper of 2021. Okay, 2021 re somehow they have asked few philosophical topics but the topics are not difficult, more or less direct. आपण माने करि परिबे. First thing होची your best teacher is your last mistake, philosophical topic टिका analytical अछि. Then is straight topic corruption. People's indifference is the best breeding ground for corruption. Third, don't judge each day by the harvest you reap but the seeds you plant. Somehow understandable and correlate करि हबो syllabus सहित and content भी अछि जानि हे जिवो कि आमे केमिति action गले केमिति reaction पाइबा. ठीक अछि. Then this earth provide enough needs to satisfy everyone, provide enough resources to satisfy everyone need but no one's greed. एटा ऑलरेडी 2-3 थरा ओपीएससी रे पढि सारची तो डिफिकल्ट नो आपण माने आराम लिखि दे परिबे. सेक्शन बी से दीटा सेक्शन में पढुतला तो सेक्शन बी रे हमें देखिबा क्वेश्चन ऑन लीडरशिप. लीडरशिप इज ए रिपीटेड थीम इन ओपीएससी. ठीक अछि. लीडरशिप इज अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल टू बिकम बेटर. लीडरशिप रिपीटेड टॉपिक. द राइट्स ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटेन्ड. ओके, तो मोर और लेस ए टॉपिक रो मीनिंग होची कि हाउ we should treasure each individual. In a democracy, individual rights are sacrosanct. Okay. Then in generation which ignores history has no past and no future, typically the question is asking that how we should take lessons from history and how we should use it for our betterment, for the economic growth and for the social upliftment. Okay. Then this is topic frequently repeated theme, women and women empowerment. You educate a man, you educate a man, you educate a woman, you educate a generation. Okay, so this is a mixture of few direct topics and philosophical topics. If we will see the questions of 2022, just a minute. Yes, if you see questions of 2022, पास्टर गोटे करिया पड़े आपण मानकु. द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन सोसाइटी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट टॉपिक. ओके, 2022. क्लाइमेट चेंज, चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड एंड स्ट्रेटजीज फॉर इट मिटिगेशन एडेप्टेशन, डायरेक्ट टॉपिक. चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज पोज्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन इन डिजिटल एज. डिजिटल एजुकेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन केमती होची, अपॉर्चुनिटी कोन अछि, चैलेंजेस कोन अछि. Then use of social media in public opinion formation and social engineering, direct topic.
everybody's responsibility is nobody's responsibility गोटे काम रे समस्त रेस्पॉन्सिबल नेबे ताले कामटा इफेक्टिवली हे परिबनी तो गोटे फिलोसॉफिकल टॉपिक अछि एंड रेस्ट टॉपिक्स आर वेरी डायरेक्ट टॉपिक्स आपण माने आराम से करि परिबे let us move to 2023 last year's paper again artificial intelligence topic directly repeated okay tool for empowerment or threat to human dignity different form में topic repeat हला environment versus economy frequently repeated topic in OPSC 2023 रे पचारला impact of digital payment on Indian economy जेहेतु UPI रो growth होची इंडिया रे एंड फ्यू अदर नेशंस आर आल्सो ऑप्टिंग फॉर यूपीआई तो डिजिटल पेमेंट विषय ऐसे पड़े इंडिया इकोनॉमी इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट कौन होची नेगेटिव कौन होची चैलेंजेस कौन होची हमको लिखिया पड़ो देन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करे क्रिटिकल थिंकिंग ओके सो रोट लर्निंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ new education policy 2020 and you have to extensively write the content from NEP 2020 how NEP 2020 aims to reform the education sector in India. Preserving cultural identity in the age of global homogenization, this is a topic already asked in a previous OPSC paper, so this question was not difficult kahi na amara GS re bhi you study about globalization and impacts okay ठीक अछि तो this topic is related to that only the globalization impact कोन होचे ता विषय रे ही टॉपिक ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली पचारि छी ओके then come to this year's essay paper okay and this year essay paper I would say कि there is shortage of words in the topics माने गोटे टॉपिक 1 2 3 4 5 words 1 2 3 4 5 6 7 words 1 2 3 4 5 words okay 1 2 3 4 5 6 words the topics are very short but have a deep meaning that means open ended essay so again OPSC completely switched to philosophical topics except this question injustice everywhere is threat to justice everywhere. So this was asked in previous UPSC as poverty anywhere is a threat to just prosperity everywhere. इटा आगु UPSC रे पढ़ी छी ऑलरेडी गोटे टॉपिक poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. तो ताकू OPSC मॉडिफाई करी पकै दला injustice anywhere is a threat to justice everywhere. ठीक अछि दैट टॉपिक मोर और लेस डायरेक्ट जानि हो करी भी हिजो बट these are four topics. Gender is a social construct. Freedom is not mere absence of restraint. Visibility is mistaken for values. The sun is new each day. Okay, these are very open-ended topics, and you have to get your contents then and there. Exam hall re. A topic आपना prepare करी जाई परिबे नाही आगुर. तो this is a hint from OPSC that they are going to ask open-ended topics in future. Okay, you cannot trust OPSC की next year again पुणी से माने switch कर जाई परिबे direct topics को किबा again पुणी philosophical topics को आसीबे काहे ना the essay strategy is variable over the years. कौन सी particular essay strategy OPSC रहोनी को वर्ष direct topic को वर्ष philosophical topics you cannot predict. So हमारा objective कौन रहइबो essay preparation रे हमर ऑब्जेक्टिव ये रहइबो कि फर्स्ट let us develop the ability to tackle open ended essay topics. This is a must. open ended essay topic को tackle करिया पई हम पाखरे कंटेंट डेवलप करिया दरकार केमती करिवा फर्स्ट थिंग टॉपिक उठेबा you can take PYQ of UPSC. You can take any topic PYQ of OPSC also okay नहीं कि ता ऊपर निजे फास्ट लिखंतु खराब लिखंतु किसी असुविधा नहीं फास्ट लिखिवा स्टार्ट करंतु बहुत खराब लिखिवे आपन को भी खराब लागियो देखियो ऐसे ओके बट दैट शुड बी द बिगिनिंग देन यू सर्च इंटरनेट
biggest teacher you search ए टॉपिक रे कंटेंट कौन कौन हे परिबो ओके मु कहूनी कि अगेन यू विल गेट द सेम टॉपिक इन द एग्जाम नो हे न पारे आपण सेम टॉपिक पाई न पारंदे बट बेनिफिट एया हबो आपण को ओपन एंडेड एसे टॉपिक को अप्रोच करिया पई वे मिल जिवो जे गोटे ओपन एंडेड एसे टॉपिक हेले मु को एंगल को देखिबी को एंगल रे कंटेंट बाहर करिवि ठीक अछि से जिनस आपनकर एडवांटेज हो सेटा ही आपन एग्जाम रे काम दबो काहे कि ना एग्जाम रे जो टॉपिक आसो सेटा नुवा थिबो सेटा पुराना नथिबो केबे हां भाग्य भलो अछि ठीक अछि रिपीट टॉपिक पड़ी गला बट जदि नुवा टॉपिक आसिला से टॉपिक को मु कोरिलेट करिवि केमिति मोर जीएस नॉलेज सहित आ पॉइंट केमिति बाहर करिवि एग्जाम रे लिखिया पई ठीक अछि ए स्किल एसे राइटिंग स्किल आपन को निजो को डेवलप करिया पड़िबो आपन पई केही करि परिबेनी टेक टॉपिक उठांतु निजे लिखंतु जहाँ भी माइंड को आसु लिखंतु तापर इंटरनेट देखंतु जे ए टॉपिक रे कोन कंटेंट अछि जदि आपन को लागिला जे आपन भूल लिखिचंते ताले सिखिबे जदि लागिला कि मु ठीक लिखिची कि अल्प लिखिची आउट के एक्सटेंड करियार अछि ताले भी सिखिबे जे कि एडिशन करिवार अछि ओके तो ए प्रोसेस रे ओपन एंडेड एसे टॉपिक को टैकल करिया पई आपनकर एबिलिटी डेवलप हो एंड दैट शुड बी द वे टू अप्रोच द एसे पेपर you cannot predict OPSC next year कौन पचारिबो and they are going into the open ended topics like UPSC although not difficult like UPSC still approachable अछि but again हमको ओपन एंडेड ऐसे टॉपिक को टैकल करिया पई निजर स्ट्रेटजी डेवलप करिया को पड़िबो ठीक अछि एंड एबे देखिबा तो एसे रे अप्रोच हमर एमति रहबो तो एबे गोटे टॉपिक जोटा की एसे पेपर ए वर्ष पड़ी गोटे फिलोसॉफिकल टॉपिक ओपन एंडेड टॉपिक सेटा हम डिस्कस करबा ओके जो तो आई हैव मेड ए समरी कि आपण मानु को एरिया रे गोटे टॉपिक रे फोकस करै में पड़िबो एसे रे कोन नै कि आपण को एसे लिखिया में पड़िबो केमती एग्जांपल आपण देई परिबे ओके सो द फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस slowly we will discuss one by one topic don't worry एकाधर ओवर बर्डन करवानी आज गोटे टॉपिक ही नवा ओके सो फर्स्ट फ्रीडम इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट फर्स्ट रीड द सेंटेंस 2 to 3 times freedom is not mere absence of restraints okay so what are the key words in these topics okay what are the key words freedom absence restraints okay freedom absence restraints okay so first let us see कि कोर डिमांड कोन अछि सर हमें डिमांड बुझले तो हमें लिखिबा जस्ट अ मिनिट हमें डिमांड बुझले तो लिखिबा डिमांड न बुझले लिखि परिबानी तो let us understand the demand of the topic so core demand of the essay is you have to know what do you mean by freedom and what is liberty because although freedom and liberty are used interchangeably but both have difference although connotation समस्तंगर समान freedom जहा aspire करे liberty भी सेया aspire करे but दीटांकर फंक्शनल वे डिफरेंट को वे रे से माने ऑपरेट करंती सेटा डिफरेंट ठीक अछि freedom and liberty हमें देखिबा and why freedom and liberty are necessary जदी freedom and liberty necessary then what is the need of restraint दरकार कोन जदि रिस्ट्रेंट न रहिला ताहले सोसाइटी रे प्रॉब्लम कोन हो एंड व्हाट वुड बी द रिपरकशन इफ द रिस्ट्रेंट इज नॉट देयर जदि रिस्ट्रेंट रहिला ताल सोसाइटी प्रॉब्लम कोन हो अच्छा ठीक अछि जदि रिस्ट्रेंट हमें जानले रिस्ट्रेंट दरकार रिस्ट्रेंट न रहिले प्रॉब्लम हो हमें ए पर्यंत आसिले अच्छा तापर एनालिसिस करबा आम सोसाइटी रे किछि सेमति रिस्ट्रेंट अछि की अच्छे डेफिनेटली किए रिस्ट्रेंट रखिछि किए एन्श्योर करछि रिस्ट्रेंट आम कॉन्स्टिट्यूशन how our constitution aims to ensure freedom with reasonable restriction you all have studied fundamental rights you know the fundamental rights are not are always applicable in with certain restrictions reasonable restrictions and there are grounds under which the fundamental rights are applicable and say caveat is there achi ki without reasonable restriction fundamental rights won't be operating okay then hame likhiba ki जो रिस्ट्रेंट कथा हमें कहउचंती ओके से रिस्ट्रेंट ता
can it only be external restraint ना internal restraint भी हेई परिबो because आमे जेतल internal restraint कथा कहूचे then आसीगला ethics GS4 ठीक अछि internal restraint माने हमर ethics हमर morality okay value inculcation so these are internal restraints. So an additional dimension would be classifying the restraints into external. What are the external restraints? Our constitution, law, rules, regulations. These are external restraints. Internal restraints are ethics and morality. And after these discussions, you can conclude the essay by adding that कौन पचार टॉपिक फ्रीडम इज नॉट मियर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ओके तामाने जदि खाली रिस्ट्रेंट न रहिबो ताले से फ्रीडम रो किसी मूल्य नाही तो हमें कंक्लूड करिबा कि रादर देन फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स आवर अप्रोच शुड बी फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रेंट्स जोटा हम कॉन्स्टिट्यूशन एस्पायर करूछ माने रादर देन हैविंग फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट हमर किछि हमर माने बाडा बता किछि नै हमें जहा इच्छा सेया करिबा हमर एटा दरकार नै हमर दरकार कि फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रेंट नॉट फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स ओके सो इन दिस वे यू कैन कंक्लूड द एसे जो जो डायमेंशन आमे ए एसे रे एबे डिस्कस करले सही से डायमेंशन ऊपर किछि किछि पॉइंट्स डिस्कस करिवा सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ए टॉपिक रो कनोटेशन कोन कोन डायमेंशन हे परिबो ठीक अछि अच्छा फर्स्ट थिंग व्हाट इज फ्रीडम एंड व्हाट इज लिबर्टी ओके are both same and different okay what is freedom freedom is the power or right to speak you can speak you can act you can change without any hindrance or restraint okay that is freedom in modern liberal ideology okay freedom माने कोन freedom होची in terms of speech expression religion जोटा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अछि ओके इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट द फ्रीडम इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस और एक्सप्रेशन ओके देन लिबर्टी ओके लिबर्टी ऊपर डिस्कशन बहुत फिलोसोफर बहुत वे रे करचंती ठीक अछि सो लिबर्टी माने होची कि तार बॉटम लाइन होची कि एमिति गोटे कॉन्सेप्ट जोटा कि अल्टीमेटली एस्पायर करे इंडिविजुअल हैप्पीनेस ओके लिबर्टी इज ए कॉन्सेप्ट दैट अल्टीमेटली एस्पायर फॉर इंडिविजुअल हैप्पीनेस आमे पॉलिटिकल थ्योरी भितर को जीवानी आमे देखिबा कि हाउ व्हाट जीएस जनरल स्टडीज अंडरस्टैंडिंग रो लिबर्टी माने कोन हमर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ओके तो लिबर्टी माने होची the liberty means the absence of restraint upon the existence of social conditions which in modern civilization are necessary guarantee of individual happiness माने liberty माने होची एम्ति कंडीशन रहिबो जोटा कि इंडिविजुअल हैप्पीनेस को इंश्योर करिवो ठीक अछि बट ट्रू सेंस रे लिबर्टी प्रैक्टिसेबल नुह काहे कि नुह जदी ट्रू सेंस रे लिबर्टी प्रैक्टिसेबल हबो ताहले मो हैप्पीनेस इंडिविजुअल हैप्पीनेस कोन मु डिसाइड करिवि मु केमित रहिले मु हैप्पी रहिबि सेटा मु डिसाइड करिवि मु कहबि मु रास्ता रे एका चलीबि आउ काहू चलियाउ देबिनी दैट इज द वर्जन ऑफ माय हैप्पीनेस बट इज दैट पॉसिबल नो दैट इज नॉट पॉसिबल ठीक अछि बट तो नेक्स्ट लाइन में लिखिले कि दैट लिबर्टी इन दैट सेंस इज नॉट प्रैक्टिसेबल और डिजायरेबल इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी सेमति हेई परिबोनी केबे भी हेले कोन हबो केओस हबो अनार्की हबो तो केओस अनार्की हेले जो लिबर्टी इंडिविजुअल हैप्पीनेस को हम एस्पायर करे ट्राई करूचे लाइफ ही कंप्लीटली एंडेंजर्ड हो जिवो सोसाइटी एग्जिस्ट ही करिवोनी सेथि पई restraint must be imposed on individual liberty so that liberty can be enjoyed by all members of the society clear the difference between freedom and liberty and how both are necessary to have a civilized and prosperous society then why these are necessary ame discuss kariba particularly indian context re freedom और liberty काहे की दरकार ठीक अछि first thing to protect
डाइवर्सिटी एंड प्लुरालिज्म इंडिया रे डाइवर्सिटी इंडिया गोटे डाइवर्स कंट्री आम कहूचे यूनिटी इन डाइवर्सिटी सो गोटे डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने आम फ्रीडम एंड लिबर्टी दरकार सो दैट समस्ते निज निजर वे ऑफ लाइफ को इजिली प्रैक्टिस करें ओके आम प्रिएम्बुल भी लिखाई ठीक अच्छे जदि आमे लिबर्टी नदबा ताले माइनॉरिटी कम्युनिटी would not be living equally they would be at the mercy of the majority community ठीक है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन पे लिबर्टी दरकार ना सो जने लोक इंडिया जोठी भी थाओ नागालैंड रे थाओ ओडिसा रे थाओ वेस्ट बंगाल थाओ गुजरात रे थाओ ओके दे ऑल कैन लिव द वे ऑफ लाइफ दे वांट ओके दे ऑल कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन वैल्यूज ठीक है अच्छा देन लिबर्टी or freedom they are also necessary because we have a deep rooted social hierarchical system we have a deep rooted social hierarchical system जोटा कि there are so many social stigmas okay अब आपण social reform movement मॉडर्न इंडिया रे देखंतु सती थिला पुरदा थिला ओके तो social stigma जो अछि सपोज हमें कास्ट सिस्टम देखिबा दैट्स अ social stigma तो हिस्ट्री जो सोशल स्टिग्माज अच्छी और सोशल फॉल्ट लाइन्स अच्छी से फॉल्ट लाइन्स को रिफॉर्म करिया में फ्रीडम दरकार लिबर्टी दरकार टू एनेबल सोशल रिफॉर्म ठीक अछि आउ कोन पे लिबर्टी दरकार टू प्रिवेंट ऑथोरिटेरियनिज्म आपण माने ईरान रे देखछन्ती कोन होची ईरान रे आपण माने देखुछन्ती जे सेठी लोक माने प्रोटेस्ट करछन्ती तांको रेजिम अगेंस्ट रे तो लोक माने जदि प्रोटेस्ट करछन्ती पीसफुल प्रोटेस्ट इज आल्सो गेटिंग वायोलेंटली सप्रेस्ड द पीसफुल प्रोटेस्ट इज आल्सो गेटिंग वायोलेंटली सप्रेस्ड ता माने हे गला कोन ब्रिटिश रूल ठीक अछि तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म ब्रिटिश समय रे कोन थिला हमर ब्रिटिश टाइम रे ऑथोरिटेरियनिज्म ही थिला सेठी फ्रीडम लिबर्टी रो किछ नथिला नो वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी ओके सो ऑथोरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट करिया पई आम कॉन्स्टिट्यूशन हमर बड़ ज्योग्राफी अछि बहुत पॉपुलेशन अछि समस्त इंडिविजुअल लिबर्टी फ्रीडम प्रोटेक्ट करिया पई और ऑथोरिटेरियनिज्म को प्रिवेंट करिया पई वी हैव certain provisions in the constitution like fundamental rights 12 to 35 they act as check on government you all know okay and सबुठु important fundamental right after right to life and personal liberty article 21 is freedom of speech and expression article 19 that allows citizens to criticize the state you can criticize the state for any of the policies of the state and that is the only way to keep the democracy healthy and accountable okay so prevention of authoritarianism promotes accountability in a democracy then next how kon pai freedom darkar for individual growth and action for individual growth promotion of human dignity mu jo कहली कि right to life and personal liberty that does not mean that as one person will live just like an animal existence jama bi no that is not about just mere animal existence but to live with dignity so jone dignity re बंचिया पय ताको फ्रीडम दरकार लिबर्टी दरकार ओके अच्छा जदी नेक्स्ट कांसेप्ट जदी आपण मानन को गोटे जिंस तयारी करिया पय फ्रीडम दिया न जीवो ताले आपण नुवा जिंस तयारी करि परिबेनी ठीक अछि ता माने आपण को इनोवेशन करिया पय रिसर्च करिया पय क्रिएट करिया पय फ्रीडम लिबर्टी भी नेसेसरी सो नेक्स्ट पॉइंट से लिखाई छी कि टू इनोवेट टू क्रिएट एंड टू प्रॉस्पर according to your own need according to your societal need according to the need of the nation freedom and liberty is necessary okay next line हमें डिस्कस करिबा जहां जहां हमें कोर डिमांड ऑफ देश रे डिस्कशन करले सेम पॉइंट्स हमें तारो एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स हमें कोन लिखिबा एसरे हमें सेटा डिस्कशन करूचे ठीक अछि व्हाट आर द रिपरकशंस ऑफ रिस्ट्रेंट फ्री फ्रीडम और रिस्ट्रेंट फ्री ह्यूमन एक्शन जदी रिस्ट्रेंट रहिबोनी फ्रीडम रिस्ट्रेंट रहिबोनी किछि लॉ रूल रेगुलेशन रहिबोनी ताल हबो कोन सोसाइटी फर्स्टली देयर विल बी
जदि अनरिस्ट्रेन्ड बिहेवियर रहिला अनकंट्रोल्ड बिहेवियर अनरिस्ट्रेन्ड बिहेवियर ताहले ग्रीड डेवलप हबो जदि जनकर ग्रीड डेवलप हला ताहले ग्रीड विल लीड टू various socio-economic evils like exploitation, concentration of wealth, poverty, consumerism, alcoholism. Okay, all these things will be developed. And concentration of wealth ले कौन हबो inequality बढ़िबो एमितिरे आम सोसाइटी इनइक्वालिटी अछि तो जदि फ्रीडम रहिबो रिस्ट्रेंट न रहिबो ताहले इनइक्वालिटी आउरी बढ़ि जिवो ठीक अछि अच्छा तो सब बेले हम ट्राई करबा एसे रे कि करंट इवेंट को लिंक करिया पई एसर कॉन्टेक्स्ट सहित केमति लिंक करबा आपण मन समस्त बे जानि थिबे जे यूएसए जाई कि वेनेजुएला रे पसी गला ओके कंट्री को टोटल निज कंट्रोल रे नै गला ठीक अछि तो ताकू हम एठी लिंक केमति करि परिबा हम एठी लिंक करि परिबा कि रिस्ट्रेंट फ्री एक्शन हेले कोन होछि at the collective level suppose हमें कहबा कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल रे at the collective level lack of restraint on part of nations जदि कंट्री माने निज भीतर रिस्ट्रेंट न रखिबे निजर एक्शन ऊपर रिस्ट्रेंट न रखिबे जहा इच्छा ताहा करिवे ताले कोन हबो दिस विल लीड टू इंपेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म नियो कॉलोनियलिज्म आगरो माने से माने आस्तले गोटे कंट्री को निज नियंत्रण नै जाउतले एबे भी सेया होछि मिलिटरी माइट जा पाखरे अछि जा पाखरे मिलिटरी पावर अछि जा पाखरे मनी अछि से कोन करछि गोटे वीक कंट्री को निज कंट्रोल को नै जाउछि सपोज एग्जांपल हम दे परिबा इन्वेजन ऑफ यूक्रेन दे परिबा रिसेंट इन्वेजन ऑफ यूएस ऑन वेनेजुएला recent example this will give you mark in the exam okay then आउ कोन हबो सोसाइटल डिसऑर्डर एंड chaos जदि फ्रीडम न रहिला ताले अनार्की हबो जदि सॉरी रिस्ट्रेंट न रहिला ताले अनार्की ले कोन हबो लॉस ऑफ फ्रीडम एंड सोसाइटी विल लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म और टायरानी सोशल डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट हबो सोशल डिविजन काहे कि हबो काहे ना जदि रिस्ट्रेंट न रहिला ताले आउ जणे कोन करबा आउ जणे को अधिकार छडे नबो अधिकार छडे नेला तारे कॉन्फ्लिक्ट हबो कम्युनल हार्मोनी नष्ट हो जिवो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो देन डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी जदि रिस्ट्रेंट न रहिला मु ग्रीडी हे गली मु जणको अधिकार छडे नेली ताले ता डिग्निटी मु हैम्पर कली ओके मोरालिटी लॉस हला एथिक्स लॉस हला ओके ठीक अछि देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीडम इटसेल्फ फ्रीडम रो ही डिस्ट्रक्शन हे गला ठीक अछि देन देखिबा हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू बैलेंस फ्रीडम वर्सेस रिस्ट्रेंट यू कैन राइट ए पैराग्राफ ऑन दिस बिकॉज़ दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन okay how the Indian constitution aims to balance freedom versus restraint the Indian constitution is unique because it balance liberty with reasonable restriction jota we decide discussion kale how it is different from USA because in USA you have absolute freedom of speech jota ki India re nahi okay India state can in India we can limit the liberty in the interest of few things kon seada सब sovereignty integrity public order decency or morality ए ग्राउंड रे हमें रिस्ट्रेंट करि परिबा फ्रीडम को so next concept can restraint be only external or they can be internal or external yes they can be internal and external both हमें डिस्कशन कले एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट माने लॉ rules regulations these are external restraint okay ta mane but more important than external restraint is internal restraint mane self restraint or self discipline जदि सेल्फ रिस्ट्रेंट किंबा सेल्फ डिसिप्लिन न रहिला ताहले एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट रो भी एप्लीकेशन ठीक से होबन ता माने जदि जनकर एथिक्स नाही मोरालिटी नाही ताहले लॉ रहिले भी किछि लाभ होबनी जहा करिया था से ही करिवो ता माने टू हैव ए प्रॉस्परस
and peaceful society, we need both external restraint and internal restraints. Okay, तो गोटे इंडिविजुअल ऊपर तीन प्रकार रिस्ट्रेंट काम करे. गोटे होची सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रेंट, माने मु एटा करिवि मु एटा करिविनी. सेकेंड लेवल ले काम करे सोसाइटल रिस्ट्रेंट, माने सोसाइटी कोन कोन कंडीशन इम्पोज करছে, माने चोरी करिवाटा खराब जिंस, एटा होची सोशल रिस्ट्रेंट. जे चोरी करिवो ताकू जेल को पठा जिवो किमा ताकू सोशल बॉयकॉट करावो. दिस काइंड ऑफ थिंग सोशल रिस्ट्रेंट. ओके, देन पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट जोटा कि हमें जोटा स्टेट इम्पोज करছে, like law, rules and regulations. You can discuss here कि internal restraints are as important as external restraints. Okay, गांधी कौन कहते? गांधी कहते जे जने सत्याग्रही हवा पाई. ओके, गांधी कहते ना सत्याग्रह होची वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो जी सत्याग्रही से सब बेले सेल्फ रिस्ट्रेंट रे काम करे. ओके, ता माने गांधीयन व्यू ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट formed an indispensable part of Gandhi's notion of satyagraha. Okay, एठी हम गांधी को इन्वोक करि परिबा so that we'll get few more marks. ठीक अछि. तो तापर गांधी कहले कि जहार सेल्फ रिस्ट्रेंट नाही, जे रिस्ट्रेंट फ्री लाइफ चाहूची, ओके, से निज पैशन रो स्लेव. ता माने लिखि जंती से गांधी कहि जंती जे मैन हु सिलेक्टेड इन द पाथ ऑफ रिस्ट्रेंट फ्री लाइफ becomes in the eyes of Gandhi a bonded slave of passions. On the contrary, जहां जे रिस्ट्रेंट को एक्सेप्ट करे, सेल्फ रिस्ट्रेंट को एक्सेप्ट करे, on the contrary, he who accepted restraints and rules released himself. से बॉन्डेड हे गेला, से रिलीज हे गेला, फ्री हे गेला. ता माने इट इज जोटा मु डिस्कस करथली फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रेंट, नॉट फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट. बुझी पारलो बे? फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रेंट. ठीक अछि. देन कंक्लूजन हमें कोन लिख परिबा? सेम जिंस हम इन्वोक करबा. वी नीड फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रेंट्स, नॉट फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स. ओके, ता माने फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट रे फर्स्ट कांसेप्ट, दिस इज सेकंड कांसेप्ट. इन द फर्स्ट कांसेप्ट एटा होची सेल, दिस इज एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट जोटा हम डिस्कस करले. मु चाहू छी फ्रीडम, मोर रिस्ट्रेंट की दरकार नहीं, माने मु चाहू छी कि बाहर मो ऊपर किसी प्रेशर न पड़ो, मते केही न कहू तो एटा कर ना एटा कर, दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग. सो आई वुड बी वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट, बट फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रेंट की वांट करिवो? जी सेल्फ इम्पोज्ड, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डिसिप्लिन जहार थिबो, से कहबो नहीं, आई वांट फ्रीडम बट आई विल बी हैविंग माय ओन डिसिप्लिन, I will be having my self-regulation. I will be having my self-imposed principles. जो वे मु काम करिबे एंड वैल्यू इनकलकेशन. फ्रीडम थ्रू रिस्ट्रेंट पई सबुट इंपोर्टेंट जिंस होची वैल्यू इनकलकेशन. ता माने अल्टीमेटली जदी ए जिंस हमें करिबा ताहले दैट विल एनहांस द फ्रीडम. इट विल नॉट लिमिट द फ्रीडम, इट विल एनहांस द फ्रीडम. सो ए प्रकार ऑप्टिमिस्टिक वे रे आमे एंड करि परिबा ऐसे. ठीक अछि. आई होप यू गॉट सम आइडिया कि फिलोसॉफिकल एसे को आमे केमती अप्रोच करिबा. सो देन सेकंड एसे जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, आमे आराम से डिस्कशन करिबा. वी नीड नॉट बी इन ए हरी. ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड काइंड अटेंशन. थैंक यू.